L- Dear students of 10th class, continue to previous lesson, Long Walk to Freedom, which is a long lesson. It is page number 33. The paragraph starts with, it is from these comrades in the struggle that, and the very passage today ends, I was not troubled by the laws of man or God. So first of all, let us see what the new words or difficult words mean. Comrades, fellows, mates stand up to face with courage attacks and torture, brutality, resilience, regain or return to its original position, defy, refuse, deny, trump, success, conquer, to control or overcome, grimaced, sadist, push it to our limits, made to face harsh treatment, glamour, faint, shine or glow, extinguish, stop burning, to end or die, twin, two, double, couple, obligations, duties, responsibilities, human, kind, gentle, sympathetic, inclinations, affinities, fondness, isolated, left alone, inevitably, necessarily, inescapably, ripped from, taken away from, twilight, gloom, foggy, existence, presence, prevalence, secrecy, privacy, rebellion, mutiny, outbreak, revolt, choose to, wish to, abide by, to follow or obey, tribe, race, clan, customs, rituals, practices, traditions. So let me now read the passage and its meaning to some extent. It is from those comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. میرے ان ساتھیوں کے جدوجہد سے میں اس قابل ہوا کہ میں ہمت کا معنی اور مفہوم سمجھ سکا. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. بار بار میں نے دیکھا کہ مرد عورتیں اپنی زندگی کو نشاور کر رہے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے. I have seen and stand up to attacks and torture without breaking. میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے بڑی ہمت کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کیا اور اپنی ہمت دکھائی. strength and resilience that defies the imagination, جو ہم خیال میں بھی نہیں لا سکتے ہیں. I learned that courage was not only the absence of fear but the trump over it. ہمت یہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس ڈر نہیں ہے، لیکن اگر ڈر بھی ہے لیکن ڈر ہونے کے باوجود وہ انسان کامیابی کی طرف آگے بڑھے، اسی کو ہمت کہتے ہیں. The brave man is not he who does not fear effort. بہادر آدمی وہ نہیں ہے جو ڈرتا نہیں ہے، لیکن but he who conquers that fear. لیکن وہی بہادر ہوتا ہے جو خوف سے بھی آگے بڑھتا ہے اور خوف سے مرعوب نہیں ہوتا ہے. No one is born hating another person because of color of his skin. کسی بھی انسان کے ابتدا جنم میں ہی اس بات کی کوئی نفرت نہیں ہوتی کہ اس کے رنگ کی بنیاد پر اسے نفرت کرے. ہز بیک گراؤنڈ یا اسے نسل کی کوئی واقفیت نہیں ہوتی ہے، مذہب کی کوئی واقفیت نہیں ہوتی ہے. پیپل مسٹ لرن ٹو ہیٹ. لوگ بعد میں سیکھ جاتے ہیں. اف دے کین لرن ٹو ہیٹ دے کین بی ٹاٹ ٹو لو. جب وہ نفرت سیکھ سکتے ہیں تو انہیں محبت کرنا بھی سکھایا جا سکتا ہے. لو کمز مور نیچرلی ٹو دا ہیومن ہارٹ دین اٹس اپوزڈ. کیونکہ محبت انسان کے دل میں ودیت ہوتی ہے، پہلے سے یہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتے ہے. ایون دا گریمسٹ ٹائمز ان پرزن. جبکہ میری سب سے سخت ترین موقع جو جیل کا تھا، وین مائی کامریڈس اینڈ آئی ور پشڈ ٹو آور لمٹس. جب مجھے اور میرے ساتھیوں کو بہت ظلم
सहना पड़ा. I would see a glimmer of humanity in one of the gods. लेकिन फिर भी मैंने एक गॉड के दिल में इंसानियत देखी. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure. हाँ, कुछ लम्हे के लिए ज़रूर, लेकिन ये मुझे एश्योर करने में और मुझे आगे जाने में इसने हिम्मत दी. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. इंसान की जो अच्छाई होती है वो छुप सकती है लेकिन ख़त्म तो नहीं हो सकती है. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ डिफरेंट ऑब्लिगेशंस. ज़िंदगी में इंसान के दो तरह के फ़राइज़ होते हैं, उसके फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, चिल्ड्रन, और एक ऑब्लिगेशन उसके लोगों की तरफ से होती है, कम्युनिटी की तरफ से, कंट्री की तरफ से. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इनकलिनेशन. लेकिन एक अच्छे माहौल में ये दोनों फ़राइज़ अच्छी तरह से अंजाम दे सकता है अपनी इस्तात और ताकत के मुताबिक. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दीज ऑब्लिगेशंस. लेकिन अफ्रीका जैसे मुल्क में ये फ़राइज़ अंजाम देने मेरे लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल था. इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका में एक आदमी किसी भी रंग का, खासकर काले रंग का, अगर वो ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारना चाहता था लेकिन उसे सज़ा दी जाती थी, उसे अलहदा किया जाता था, अलग थलग किया जाता था. इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राई टू फुलफिल ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली. जो भी अपने हुकूक की पासदारी करना चाहता था उसे अपने समाज से दूर किया जाता था, घर से दूर किया जाता था. एंड फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और वो भागने पर मजबूर हो जाता था. एंड टिल इट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, और वो फिर अंडरग्राउंड या खुफिया हो जाता था. और आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. पहले तो मैंने लोगों को अपने घर से ज़्यादा तरजीह नहीं दी. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने लोगों की खिदमत करनी चाहिए, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्राम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड. लेकिन मुझे लगा कि मुझे बसीती भाई, बसीती ज़िम्मेदार रोका जा रहा है. आई वॉज नॉट बॉर्न विद हैंगर टू बी फ्री. मुझे आज़ाद रहने के लिए पहले से ही कोई ख्याल नहीं था. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. मुझे लग रहा था कि मैं हर तरह से आज़ाद हूँ. फ्री टू रन इन फील्ड्स इन टू माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट कैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट lies under the stars and ride broad backs of slow moving bulls. हाँ, जो भी मेरे मसरूफियात थे बचपन के उनकी, और मैं आज़ाद अपने आप को समझ रहा था. As long as I obeyed my father and abided the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपने कबीले के रस्म को मानता रहा, मुझे इंसान या खुदा का कानून कोई तकलीफ़ नहीं देता था. थैंक यू.